السلام علیکم ناظرین. ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستانی اور کینیڈین کلچرز کا. ہمارے ینگسٹرز کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں اور انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا پاکستانی کلچر ان کے لیے کینیڈین سوسائٹی میں مرج ہونے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, یا اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کے لیے اپنے 3 ینگسٹرز کو انوائٹ کیا ہے جن سے ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں گفتگو کی جانب. ہماری آج کی پہلی مہمان ہیں فصیح مختار, یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے بیچلرز کر رہی ہیں اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں. جی. اور ناظرین, ہمارے دوسرے مہمان ہیں فرحان خان. انہوں نے ہمبر کالج سے بیچلرز کیا بزنس مینجمنٹ میں, اس کے علاوہ آج کل اب یہاں پہ ایک معروف ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں. ہماری تیسری مہمان ہیں آج کی آمنہ راشد, یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے بیچلرز کر رہی ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ٹورانٹو میں مقیم ہے. فصیح, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ابھی 6-7 سال ہوئے ہیں یہاں کینیڈا میں آئی ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کینیڈین کلچر اور پاکستانی کلچر میں کیا فرق ہے؟ کینیڈین کلچر اور پاکستانی کلچر میں جو مجھے سب سے زیادہ فرق محسوس ہوا وہ ہے ایک فیملی لائف سٹائل مینٹین کرنے کا. پاکستان میں آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں, یا ایک آٹومیٹکلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سب کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہیں, ایون دو آپ کی ایک سوشل لائف ہے, آپ کی پڑھائی چل رہی ہے, جاب ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی آپ نے گھر اپنی فیملی کے پاس آنا ہوتا ہے. یہاں پہ آئی فیل کہ ضرورت بھی ہے اور آٹومیٹک سی بات ہے کہ آپ تھوڑے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ایز انڈیویژولز. میرے پیرنٹس دور رہتے ہیں وان میں پڑھتی ہوں ٹورانٹو میں ہوں, تو اب میں وہاں رہتی ہوں, ان سے میری ہر 2 ہفتے بعد ملاقات ہوتی ہے. تو وہ بات نہیں ہے جو پہلے پاکستان میں تھی, جو میرے حساب سے تھوڑا سا ایک کون ہے, پرو نہیں ہے. بٹ پرو پھر یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے اس طرح میں ابھی اکیلی رہتی ہوں, میں پچھلے 5 سال سے جاب کر رہی ہوں, وہ انڈیپینڈنس یا یہ سوچ کے ساتھ کہ میں سیکیور ہوں یا میں کر سکتی ہوں, یا عام سی باتیں یہاں ہر کوئی کرتا ہے, وہ چیز مجھے شاید پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی. بیکاز مجھے بھی کنسرن رہتا ہے سیکیورٹی کا, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتی میں پاکستان میں اکیلے رہنا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو مجھے ڈفرینس لگا. اوبویسلی ہر کمیونٹی کی, ہر کلچر کی الگ اچھی چیزیں ہیں, ہر بری چیزیں ہیں, تو بٹ ہاں فیملی لائف بہت مسنگ ہے یہاں پہ. فرحان, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ Depends how your family is living. Culturally, it's a major difference to me. People over there, they do everything together. Over here, you're okay if you have your separate family and your brother's living somewhere else. I'm living in a different place. You know, my mom's living in a different place. So life is very open here compared to, I visited there. I was very little when I came here, but I visited there recently. I noticed that family there is well grounded and all together. They do everything together. I think that's the most I've noticed. اور آپ کیا کہتی ہیں؟ Yeah, I would also say that there's a huge difference in family life and dynamic because you live with your extended family in Pakistan. You are well-grounded, you are cultured, and here you don't have that. And I think of it as a con. And it's funny because I grew up in Canada and she grew up in Pakistan. She thinks it was a pro. But whenever I go back to Pakistan every 6 or so years, I love it. I love hanging out with my family. I love doing everything with them, like he said, and you know, it's very different. And I think here you really need to ground yourself in your culture. It's up to you to do that. Over there, it's kind of enforced on you through school, through your social networks, through your family. So it's very different dynamic. تو ناظرین, چلے دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں communitydebate.go@gmail.com پر. ہم ٹویٹر اور فیس بک پر بھی موجود ہیں, تو ہمیں فالو کرنا نہیں بھولیے گا. تو چلیں دیکھتے ہیں کمیونٹی اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس جنریشن گیپ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس میں سے یہاں کا ماحول, اسکولنگ, کلچر, لوگ, اور سب سے بڑی ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی ہیز ٹیکن اوور کمپلیٹلی ان آر جنریشن, وہ از واٹ آئی مین. کیونکہ اس کے وجہ سے جو چینجز آئیں ہیں وہ ریورسیبل نہیں ہیں, کیونکہ یہاں سے صرف چیزیں ایڈوانس ہوتی جائیں گی, پیچھے نہیں جائیں گی, ایز اپوز ٹو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن جہاں سب کچھ مچ مور سمپل تھا. اٹ واز یو نو مور ون آن ون انٹریکشن ود ون اندر. آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی سب کچھ ہے, ہر
किसी के हाथ में सेल फ़ोन है, हर किसी के हाथ में लैपटॉप है. उसकी वजह से हमारी सोशल अवेयरनेस तो बढ़ी है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसकी वजह से एक दूसरे से हम दूर हो गए. These are some challenges that you face when you're young, and I think one of the main problems this causes is it sort of leads kids who aren't able to deal with it into sort of creating two separate lives for themselves. So they have one life which is at school, so I'm going to behave with my school friends in this way, and I'm going to talk in this way with them, and then when I come home I'm going to behave this way with my family because they're from a different culture. And so having these two diverging personalities can create a lot of internal conflict and lead to a lot of problems down the road. However, if you're able to deal with these challenges when you're young and learn from them, being part of two different cultures presents you with tremendous opportunities and a lot of new and interesting insights into how people work and how society works in general. So a lot of insights I got, for example, when I was young, is I understood how two different sets of people, how they thought and how they behaved, and what kind of things they valued and what kind of beliefs they had. वेलकम बैक नाज़रीन. फसिया, आप 6 साल पहले आई टोरंटो, जैसे कि आपने बताया. आपके नज़दीक कैनेडियन कल्चर ज़्यादा अहम है आफ्टर 6 years, या आपके लिए अभी भी पाकिस्तानी कल्चर ज़्यादा अहमियत रखता है? बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर आंसर है. मेरे लिए अभी भी पाकिस्तानी कल्चर ज़्यादा अहमियत रखता है. इसके पीछे मेरा अपना बायस भी हो सकता है, क्योंकि मैं वहाँ 15-16 साल लाइफ के गुजारी और यहाँ पे आए हुए सिर्फ 6-7 साल हुए हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ का कल्चर पसंद नहीं है. यहाँ के ओपन मॉडर्न कल्चर की वजह से मुझे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो शायद मुझे पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिलती. बट आई गेस वो जैसे हम पहले बात कर रहे थे, फैमिली लाइफ हो गया, त्योहारों को सेलिब्रेट करना, सब चीज़ मिल के करने वाली जो एक आदत है, आई थिंक वो एक आदत है जो अब तक मेरे अंदर है और हमेशा रहेगी. इसीलिए मतलब मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं पाकिस्तान की तरफ खिंची चली जाती हूँ कि मैं बस जाऊँ और फिर उसी तरह से जितना भी थोड़ा वक्त मिले उस तरह टाइम स्पेंड कर सकूँ. मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अहम है. आई फील कि उसने मुझे बनाया है जो आज मैं हूँ. मेरी पर्सनालिटी 6 साल में तो नहीं बदलती, लेकिन जो 15 साल काम पाकिस्तानी कल्चर ने मेरे ऊपर किया है उसकी वजह से मैं वो शख्स हूँ जो मैं आज हूँ. पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन की प्रेसिडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में. एंड आई फील कि मैं उस मुकाम पे इसी वजह से, क्योंकि मेरी इतनी क्लोज अटैचमेंट है पाकिस्तान से कि जो यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे, मैं उनके लिए घर यहाँ खींच के ला सकती हूँ इन वट एवर स्मॉल वे आई कैन. तो इसलिए मेरे लिए पाकिस्तानी कल्चर आई फील हमेशा अहम रहेगा. फरहान? For me, obviously, I spent most of my life here. I was very little again when I came here. So it's important for me here rather than there, because I hardly visit there. In terms of culture, there's not really a difference, you know, because as long as you're working, you're following what you follow, you hang out with your friends. For me, culture is how you live, basically. And I think because I grew up here, I'm able to connect with anybody from any country, different cultures and different people. I guess this is why I'm successful in my work online, like because I can talk to more people. आपके लिए कौन सा कल्चर ज़्यादा अहम है? That's a really good question. मैं आई थी कनाडा जब मैं 3 साल की थी, तो बहुत छोटी एज में आई थी और यहाँ बड़ी हुई हूँ, यहाँ के स्कूल में गई हूँ and everything. But I wouldn't say either. इसलिए जो हमारा ये जनरेशन है, it's very interesting. इसलिए हम पाकिस्तान से आए तो हमारे माँ बाप फैमिली वर पाकिस्तानी, लेकिन हम यहाँ बड़े हुए हैं तो we're Canadian too. और जब हम यहाँ होते हैं तो लोग हमको फेस वैल्यू पर पाकिस्तानी कहते हैं, जब हम पाकिस्तान जाते हैं लोग हमको फेस वैल्यू पर Canadian कहते हैं. तो it's really I think it's just a new generation that transcends those identity constraints. We've gone beyond that. Like, I would just say that I'm Pakistani Canadian. It's just a mix of both. I wouldn't identify with one over the other. तो जैसे आपके पेरेंट्स का कल्चर है जो मतलब पाकिस्तानी कल्चर है, वो आप लोगों को कहीं ऐसा फील होता है कि किसी तरह आपकी राह में आपके लिए रुकावट है आगे तरक्की करने में? आप बताएं. आई फील दैट ये फैमिली टू फैमिली पे डिपेंड करता है.
بٹ اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہوں تو نہیں. ہاں ان کی ایک سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وچ یو ہیو ٹو میٹ, بٹ دین آئی گیس وہ ہر ماں باپ کی ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی اٹالین ہو یا ایشین ہو یا رشین ہو, ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ان کی ایک سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ان ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرے. بٹ ان مائی پرسنل ہاؤس ہولڈ ایز لانگ ایز وہ سرٹن گراؤنڈ رولس کو ہم اسٹک کرتے ہیں, می اینڈ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, وی ہیو آل دا فریڈم ان دا ورلڈ. ان فیکٹ آر پیرنٹس sort of motivate us and push us کہ become a part of the Canadian mainstream, do what they do, learn their way of life, but at the same time یہ مت بھولو کہ where you're from, because I feel that's the benefit of living in a country like Canada which is so multicultural کہ آپ کینیڈین پوری طرح ہو سکتے ہیں but اپنی روٹس کو چھوڑے بغیر. سو آئی ڈونٹ فیل کہ میرے پیرنٹس کا لائف اسٹائل یا کلچر یا سوچ نے کبھی بھی مجھے کسی چیز سے روکا ہے. فرحان آپ بتائیں اس بارے میں. A lot of things that they wanted to do when they were back in their country, so they expect you to do the same things here. So this for is example, for example, let's say, one question comes up a lot in terms of marriage. Let's say, you want to, hey, your parents, most of the guys I talk to, I hang out in the community a lot. I do a lot of volunteering in the Islamic centers. So a lot of guys I talk to, they always tell me, my parents want me to find a girl back home and bring her here, and they expect a girl to do cooking, cleaning, and all that stuff. For me, my parents, my mother, she brought that up a couple of times, but for me it doesn't matter. It doesn't matter. What they say that they expect and what they want you to do, it's two different things. So my parents, alhamdulillah, they're okay. My mother is mostly involved in my life. My father passed away, I think 2 years ago now. So for her, it doesn't really matter. Before she used to say, do things this way, do things this way. But culturally, it's always, the most important thing was always taught in the household that, you respect your elders and be fair to other people. Never disrespect your elders. یہ چیزیں تو کینیڈین کلچر بھی کہتا ہے کہ ریسپیکٹ کریں ایلڈرس کی. Mostly I notice my friends, they're mostly Canadian, they born and raised here. To them, respect is a different thing. To us, respect is a different thing. To our to us, our parents, they say respect is you listen to them no matter what, right? But to Canadians, they can say no to their parents, and if their parents don't want them to do something, they can say in their face, like, you know what, I don't feel like doing this, or I'm never going to do this. So this is the most important. So I think parents, they fail to realize that respect is not always saying yes to your parents all the time. You always... Yeah, I think I have a little bit of a differing view on that. جب ہم یہاں آئے تھے تو I think my parents, they really tried to connect with the Canadian culture. And اس وجہ سے ہمارے پر کبھی کوئی اتنی پابندی نہیں تھی کہ یہ کرو یہ کرو. It was very open. We had dialogue, we had discussion. Or I think my parents, like ان کو they understood کہ جو جس culture میں ہم بڑے ہو رہے ہیں, it's very different than their culture. So we would talk about things. So if I wanted to do something جو انہوں نے نہیں کرا ان کے بچپن میں, تو وہ ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ ہمارے culture میں یہ نہیں ہے, تم کو یہ کرنا ہے, what's the middle ground? And we used to find that middle ground, and I think that's a very proactive way of doing it. And if you try to enforce culture on the younger generation, you're going to alienate them. That's the truth. So I think my parents, I'm very fortunate. We had a lot of dialogue, we had a lot of discussion. And because of that, I don't think that the Pakistani culture stops me from succeeding. I think it helps me succeed, because this is a very diverse country, and I have such a unique outlook because I come from a different background. I can sympathize with other immigrants. I can sympathize with other cultures. So it's a very unique dynamic, but I don't think the culture stopped me from succeeding at all. تو ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں communitydebate.geo@gmail.com پر. اس کے علاوہ ہم ٹویٹر اور فیس بک پہ موجود ہیں, آپ ہمیں فالو کریں اس کے اوپر. تو چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ کس نے تعاون کیا ہے. تازہ فوڈ کی مختلف اشیاء
कनाडा के हर छोटे बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स पर दस्तयाब हैं। पाक नेशनल फूड की तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात www.pnfdistributor.com पर हासिल की जा सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फसीहा, कैनेडियन और पाकिस्तानी कल्चर में आपको सेम चीज़ें क्या नज़र आती हैं जो आप समझती हैं कि मतलब बिल्कुल एक जैसी हों? लेट्स से कि बड़ों की रेस्पेक्ट है, उस हवाले से और भी कोई चीज़ें जो आपको लगता हो? सिमिलर चीज़ें जी। पाकिस्तानी और कैनेडियन कल्चर में बिल्कुल बड़ों की रिस्पेक्ट एक नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है इंक्लूसिविटी। आप लोगों से बहुत खुश दिली से मिलते हैं, बहुत पोलाइट तो एक चीज़ है बट यू वेरी इंकरेजिंग, वेरी मोटिवेटिंग। आप जिस तरह उनसे मिलते हैं जब आपसे कोई नया इंसान मिलता है। मैंने काफ़ी जगह घूमी है आउटसाइड ऑफ कैनेडा, अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वगैरह, वहाँ ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर आप कोई न्यू इंसान जाता है कम्युनिटी में तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पाकिस्तानी हूँ तो आई मेट विद सस्पिशन, ठीक है। दूसरी चीज़ है कोई भी हो तो वो इतनी गर्म जोशी से एम्ब्रेस नहीं करते, लेकिन कैनेडियंस हैव दिस अमेजिंग क्वालिटी अबाउट देम दैट अगर आप, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हज़ारों बच्चे हैं, आप किसी से भी एक दफ़ा मिलो वो आपसे इस तरह बात करेगा कि जैसे आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है सो दे बी वेरी विलिंग टू हेल्प यू आउट। सो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग आई फील, जो वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है कि you always have help, you always have somebody to talk to, they're always nice, always willing to go out of their way to do things for you. तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान में भी पाई जाती है, और बल्कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान में वो शायद चीज़ कम हो गई है, बट कनाडा में इट्स वाइड स्प्रेड। आप कनाडा में आपको हर जगह मिलेगी। I think actually हम यहाँ ज़्यादा फैमिली को वैल्यू करते हैं। आई नो दैट्स अ बिग स्टेटमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि हम ज़्यादा कनाडा में वैल्यू करते हैं, इसलिए हमारे पास इतनी फैमिली यहाँ नहीं है। तो हम दोस्तों को भी फैमिली बना देते हैं। तो इफ़ इट्स लाइक ईद, हम आई डोंट हैव फैमिली हियर, तो हम जाके हमारे दोस्तों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट डायनामिक। लेकिन आई थिंक वैल्यूज़ हर सोसाइटी के थोड़े बहुत सिमिलर होती हैं, एंड आई थिंक दैट वी आर सिमिलर इन द सेंस दैट वी वैल्यू फैमिली, वी वैल्यू क्वालिटी टाइम विद आवर पेरेंट्स, विद आवर लव्ड वंस एंड ऑल दैट। सो फसिया, आप स्टूडेंट लीडर भी हैं जी। आपके घर का माहौल टोटल डिफरेंट होगा। आपने कहा कि आपको आज़ादी है शुरू से ही आपके घर में, आपको, आपके भाई को। तो और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट से आप मिलती हैं यहाँ पे, तो उनकी भी सेम इसी तरह की कहानियाँ हैं? सबको उसी तरह आज़ादी हासिल है जिस तरह आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे यहाँ फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशन, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि सारी चीज़ें एक तरफ, योर एजुकेशन शुड बी अ फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। बट मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से यहाँ मिलती हूँ जो पाकिस्तानी फैमिली से आए होते हैं, जैसे फरहान ने सिंह कि उनके यहाँ रिस्पेक्ट दो अलग बात होती है। जैसे हमारे यहाँ एक सिंपल सी बात है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है, माई पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ इट, उनसे बात की जा सकती है, उनको समझाया जा सकता है। बट आई नो लॉट ऑफ फैमिलीज जहाँ ये चीज़ नहीं होती, तो किड्स are forced to do a lot of things they don't feel like doing. So for example, I know so many girls जो पढ़ना चाहती थी या जो आगे हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ दिस फियर कि कहीं भटक ना जाए या कोई किसी गलत इंसान से शादी ना कर ले, उनकी 18, 19 साल की शादियों में साल की उम्र में शादियां करा दी गई हैं, ये सोच के कि पाकिस्तान होता तो ठीक था। यहाँ पे इतने सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, यूनिवर्सिटी में हर रिलीजन, हर कंट्री के लोगों से मिलना होता है, तो कहीं कुछ गलत स्टेप ना ले लें, इसलिए उनकी जल्दी उम्र में शादी करा दो, विच आई फील इज़ वेरी अनफेयर। आप उनसे उनका बेसिक राइट, उनकी राइट टू हैव एन एजुकेशन एंड टू बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड नहीं छीन सकते जस्ट बिकॉज यू चोज टू मूव हियर। सो आई फील कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। लेट्स से कि अगर आप 200 स्टूडेंट से डील करती हैं जी, उसमें से कितने लोगों की ऐसी कहानी होगी? तकरीबन अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 25 लोग तो ऐसे होंगे। अच्छा जी, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा फिगर है। When I was growing up throughout the school years, yes, I did notice a little bit of difference because my friends, they used to go out, stay out late and hang out together, and my family always expect me to, come home at a certain time. So the clash was always for them to understand that, it's okay for people to hang out and go out with their friends, but
this is the difference of freedom when it comes to going out with your friends. Here is more important, but my family's always been open to things, so they always let me do whatever I wanted most of the time. But this is the major difference, because you know, these guys, they go to school, I'm sure they probably feel it if there's a party and their friends are staying out late, and if her parents were here, I guarantee you they'll probably tell her to come home by 11 o'clock. I'm guessing your parents are here. Yeah. Does your parents always tell you to be home at a certain time or no? No, but we'll talk about or you're allowed to. Yeah, and my parents also live here. They live in Vaughan. Okay, I didn't know that. But does your parents? Yes, as long as I answer my phone उठा लो जब हम phone करें, अगर miss कर दो call तो call me back just to know you're safe. But you're allowed to do whatever you're a responsible adult. तो नाज़रीन, गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे. आपको बताते चलें कि अगर आप अपनी राय देना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं communitydebate.geo@gmail.com पर. तो चलें देखते हैं कि कम्युनिटी इस बारे में क्या कह रही है. मैं पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हुई हूँ और नेगेटिवली इम्पैक्टेड हुई हूँ. पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हुई हूँ इसलिए कनाडा में रहते हुए मैं अपने कल्चर से बहुत प्राउड हूँ. जब मुझसे कोई बोलता है कि तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. कनाडा में ऑल्सो रहते हुए मैं उर्दू फ्लुएंटली बोल देती हूँ. अपने ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो बहुत शौक से पहनती हूँ, और मैं अपने कल्चर को एसेंस में अप्रिशिएट करती हूँ. इसलिए हमारे बोलने का तरीका में बहुत रिस्पेक्ट है. मैं एग्जांपल देती हूँ. हमारे कल्चर में जब हम उर्दू बोलते हैं तो जो हमारे बड़े होते हैं हम उनको आप कहलाते हैं, या जो अपने बड़े बहन भाई होते हैं हम उनको भाईजान या आपी, बाजी, भाई ऐसे बुलाते हैं. कनाडा में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता है अगर हम किसी को एड्रेस करना चाहते हैं, इट्स यू. कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता जो हम अपने बड़े को बोलते हो, या जो बड़े बहन भाई होते हैं उनको नाम से ही पुकारते हैं. यहाँ पे ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो इसलिए इस पार्ट ऑफ द कल्चर से मैं बहुत प्राउड हूँ. और पॉजिटिव बात यह है, नेगेटिवली इम्पैक्टेड हुई हूँ तो मैंने अक्सर ये देखा कि पेरेंट्स जो अपने बेटियों को सिखाते हैं वो अपने बेटों को नहीं सिखाते. मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ. मैं नोटिस करती हूँ कि मेरी अम्मी जब बहुत ये कहती हैं कि दानिया तुम घर की लड़की हो तो साफ किया करो, घर की लड़की हो तो ये किया करो, खाना पकाया करो, वो किया करो, ये किया करो. मैं इस आइडिया से बिल्कुल अग्री नहीं करती. जो घर के काम होते हैं वो सबके काम होते हैं, बस लड़कियों के काम नहीं होते. ऑल्सो मैंने ये देखा है कि लड़कियों को बताया जाता है कि ऐसे नहीं बोला करो, ऐसे नहीं बैठा करो, ऐसे मत करा करो. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लड़कियों पर. मैंने ये नोटिस किया है. One of the first challenges I ran into was the way my name was pronounced, and with fellow Muslims, I told them the way my mother intended it to be pronounced, which is Fussy. However, in school and in public with non-Muslims and Americans, I adjusted it, so I would tell them that my name is Fossey. And the reason I do this, or the reason I started doing this, is because it makes it easier for Americans to say my name, and they really struggle with saying my name the way it should be said. Another challenge I came into was fasting during Ramadan. And so during Ramzan time, in Pakistan, all the food markets, all the restaurants, everything on the streets closed down up until iftar time. वेलकम बैक नाजरीन. तो चलें इसी सवाल को आमना की तरफ लेके चलते हैं. तो आमना ये बताइए कि जैसे मैंने फरहान से पूछा, आपने भी यहाँ पे स्कूलिंग भी की, अब यूनिवर्सिटी में भी जा रही हैं, डिफरेंट कल्चर से भी फ्रेंड्स होंगे डेफिनेटली. तो उनकी आज़ादी में और अपनी आज़ादी में क्या फ़र्क फील करती हैं? Yeah, there's definitely a difference. मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ. My parents, they really try to encourage me and push me forward. And this isn't a common thing in the community. बहुत सारी लड़कियाँ हमारे community में उनके parents उनको इतना encourage नहीं करते, especially in education, like Freya said.
that was something that I didn't have. Like, my parents always encouraged me, always pushed me, and it made me want to succeed. It made me want to do something. So difference to tha, lekin my parents, they were open to discussion, they were open to new ideas, they were open to assimilating into the culture. So it was quite different. लेकिन मैं देखती हूँ कि जो हमारी younger generation है, हमसे थोड़ी छोटी जो अभी स्कूल में है, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा struggle होती है. I have a little sister, वो बहुत struggle करती है इसमें. जैसे उसके with social media, वो देखते रहते हैं कि जैसे ये लड़की is going out here and she's wearing this and her parents let her do this, and then they think, oh, our parents don't allow that. जब मैं बड़ी हो रही थी यहाँ, हमारे पर, like, we were very religious. We taught a lot of religion, Islamic education हमको बहुत दी थी मेरी अम्मी ने. तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में कभी बात आई भी नहीं कि हम ये करें, हम ये पहने, all that. लेकिन because of social media and how popular it is now, the younger generation, I feel, is very, they notice the gap, and they don't like the gap. So there's a big difference in generation. फसिया, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? No, मैं बिल्कुल agree करती हूँ इस बात से. And I feel social media is not only responsible कि हमें दूसरी चीज़ें देखने को मिले तो हम सोचें कि वो हम ये क्यों नहीं कर सकते. At the same time, social media एक और भी रोल प्ले करता है कि सबकी personal life has become public. तो अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ करती हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे उस चीज़ की इजाज़त दे जाए, फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा कोई इवेंट होता है, इवेंट लेट नाइट 12 बजे तक चल रहा है या मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ गई हूँ, मेरे पेरेंट्स को पता है और मुझे इस चीज़ की इजाज़त देते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तस्वीर देख के बोलते हैं कि मतलब उस बात पे बहुत सारे पाकिस्तानी क्वेश्चन करते हैं इस बात को कि ये तो गलत है, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया इज़ सो पॉपुलर दैट मेरी पर्सनल लाइफ इज़ ऑन डिस्प्ले पब्लिकली, कोई भी देख सकता है. ऐसा अक्सर हुआ है कि हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग जो इस किस्म की सोच रखते हैं, जो उसी मेंटालिटी में स्टक है, आके मेरे घर वालों से पूछा है कि वो हमने फलाना जगह फेसबुक पे फलाना तस्वीर देखी. पहले तो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर दूल्हा भी दुल्हन की तस्वीर नहीं देख पाता जी. But this is what we're talking about here, right? The clash between the two cultures. So this is exactly what it is. So she's not able to do whatever her Canadian friends are doing openly without being questioned. So the question here is, the culture back home doesn't allow all that. Correct? Like, this is what we're talking about. No, I would disagree with that. That's not what I'm saying. I think so. If you let's say if you grew up here and your parents were non-Muslim or they were white, they were completely blended into the system here. They would let you do whatever you're doing and stay out, the whole weekend, and doesn't matter what guys are commenting on what social media, you can wear whatever you want, hang out on the beach whenever you want, in whatever clothes you want. This is the difference we're talking about. But I guess you're here, generalizing it too much. तो फिर इस तरह से सब अपना culture छोड़ दे. So this is what we're talking about. We're talking about the difference there's a conflict, between, this is the difference in the culture here and the culture in Pakistan. back home in Pakistan. But that's what I'm. I think it's actually a similarity, though. That's what I want to tell you. That there's so much social media in Pakistan, a lot more than we use here nowadays. But what you can do on social media and how you are questioned by your parents on social media, or your friends are being, questioning you. Hey, I saw your picture on 12 o'clock at this place or whatever bar you were in, because your event was taking place there. They don't realize, okay, she's at a bar or she's taking care of her friends in the school, but she might not be drinking, or she might not be at a place, or that, whatever other people are doing in, let's say, a restaurant. Every restaurant here have alcohol, which is a biggest question in the community. If she's hanging out in that bar, people will be I'm sure her parents will question her, hey, why are you going there? Or other people, if they would see her social media pictures or her pictures in a bar, they would think, hey, why are you hanging out at a bar? No. Right? Back home, there's not any bars. I don't recall seeing any bars or hearing any bars. But also, this calls into question, like, you're saying the community is going to see it, but that I've always thought that it was mainly the younger generation that was on social media back home. जैसे आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की सदर हैं, तो वहाँ पे आपको ये बात में कितनी सच्चाई नज़र आती है कि पेरेंट्स वाकई में ये जो बात करते हैं कि हम अपने बच्चों की वजह से मूव हुए या उनके फ्यूचर के लिए मूव हुए, तो इसमें क्या सच्चाई है? I think every parent said that. My mother always says that. I've heard her say that, we came here because of your brighter future, and your father left because you can have everything that you want without being compromised of,
The safety was the biggest issue, because you know, if you have a little bit of money in back home, I always hear parents talking about, you know, you have safety issues, people can kidnap you and all that stuff. So they do bring that up, saying that, you know, you're more safer here. Yeah, but I do think that there is truth in that. My parents, they also say कि हम तुम लोगों की education के लिए आए. So you guys could have a good education, you can actually inspire change in the world. And मुझे इसमें सच्चाई लगती है, but I think it also, you have to think about कि जो आप कह के आते हैं and then जो आपको यहाँ environment मिलती है, it can really alter your opinions. मुझे लगता है कि best intention के लिए actions parents लेते हैं and they're genuine actions. मैं agree करती हूँ उनकी बात से कि मेरे parents ने भी ये कहा था कि हम तुम्हारी education के लिए आए हैं, and I'm pretty sure, बल्कि मैं गारंटीड है मुझे इस बात की कि जब मैं अपनी पढ़ाइयाँ ख़त्म कर लेती हूँ, मैं चाहे दुनिया के किसी हिस्से में जाके काम करना चाहूँ, इवन अगर मैं चाहूँ कि मैं वापस कराची जाके काम करूँ, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो जिस मिशन को लेके आए थे यहाँ पे उन्होंने वो फुलफ़िल कर दिया है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब लोग ये भूल जाते हैं कि वो कनाडा किस लिए आए हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि हम अगर एक नए मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ का एक नया कल्चर है, सो वी नीड टू बी ओपन टू इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. But when people who came here 20, 25, 30 years ago, when they came here, they came with that mentality and then they refused to accommodate to the Canadian culture. नहीं, उन्होंने कहा जी हम नहीं उसमें ढलेंगे, ज़रा भी नहीं ढलेंगे, तो फिर उनकी वही mentality होती है और वो रह जाती है, और फिर उनकी intentions ही नहीं होती, लेकिन as a result कि वो accommodate नहीं कर पाते, वो इतने flexible नहीं होते, फिर उनके बच्चे suffer करते हैं. और ये actually that's a really good point. इससे एक और problem मुझे I think another problem is that sometimes immigrant families यहाँ आती है और माँ बाप इतने busy हो जाते काम में कि वो उनका original intention था कि हम बच्चों की education के लिए आएंगे, we're here to give them a better life. लेकिन वो इतने फंस जाते काम में कि वो भूल जाते and then their kids start falling through the cracks. And that happens so often, such a common thing in this community. It's very sad, but intentions do change. The environment really impacts your decisions and what you decide to do, and it happens. तो नाज़रीन चलते हैं, देखते हैं इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ किसने ताउन किया है. ताज़ा फूड की मुख्तलिफ अशिया कनाडा के हर छोटे बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स पर दस्तयाब हैं. पाक नेशनल फूड की तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात www.pnfdistributor.com पर हासिल की जा सकती है. वेलकम बैक नाज़रीन. तो गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं. फसिया, एक देसी घर, देसी कल्चर में पैदा होकर यानी आप बॉर्न हुई वहाँ पे, तो आप इस चीज़ को प्राउड फील करती हैं अपने लिए, या कोई कमी फील करती हैं कि अगर मैं कैनेडियन सोसाइटी में यहाँ पे बॉर्न होती या टोटल प्रॉपर रेज्ड होती शुरू से, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता, और एक यानी देसी घर में बॉर्न होने के बाद आप फील करती हैं आप एक अच्छी सिटीज़न हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, मुझे बहुत फ़ख्र है एक पाकिस्तानी होने पे, और वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, बट इसलिए भी क्योंकि आई फील कि मेरी एक सर्टन अपब्रिंगिंग थी. फैमिली वाले तो करते ही हैं, बट एक सोशल अपब्रिंगिंग थी जिसकी वजह से जब मैं इधर आई तो यहाँ के कल्चर में एसिमिलेट होने और पार्टिसिपेट करने के बावजूद बहुत सारी गलत कामों से मैं बच गई. नॉट बिकॉज दिल ही नहीं करता था वो काम करने को, क्योंकि एक अंदर से ज़मीर आपका बिल्ड होता है आपकी सोसाइटी के हिसाब से कि आप किस तरह उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों में किस किस्म के दोस्त हैं आपके. तो फिर जिस किस्म के मैंने दोस्त इधर आके सिलेक्ट किए वो भी उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड थे कि वो उन सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करें. एंड बेस्ड ऑफ दैट आई फील कि जी मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ, कईयों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो यहाँ पे पैदा हुए हैं और रेज हुए हैं, बिकॉज उनके अंदर एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी जो हमारे अंदर एज पाकिस्तानीज़ होती है वो नहीं है. बी एक हमारे अंदर एक ड्राइव होती है कि हमने अपने माँ बाप, आई नो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मैं बहुत खुद मुख्तार हूँ इन दैट सेंस, बट एक आपके अंदर एक ड्राइव होती है कि हम एकेडमिकली एक्सेल करें या प्रोफेशनली एक्सेल करें, ताकि हमारे माँ बाप जिस मिशन को लेके इधर आएँ वो खुश हों. वो क्योंकि हम देखिए अगर मैं अच्छा पढ़ लेती हूँ या मुझे अच्छा करियर बन जाता है तो मेरे माँ बाप को उससे कोई मॉनेटरी फ़ायदा तो है नहीं. वो कभी मुझसे ही नहीं कहेंगे कि हमने जो तुम्हारी अपब्रिंगिंग की उसकी हमें पैसे दो इन रिटर्न.
بٹ اسٹل ہمارے اندر یہ ایک ڈرائیو ہوتی ہے. اینڈ آئی فیل بیکاز آف دیٹ ڈرائیو میں پاکستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. یونیورسٹی میں میں ایک اور ڈیزگنیشن کے لیے وائس پریزیڈنٹ ایکسٹرنل کے لیے رن کر رہی ہوں. اس کے علاوہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیکاز آف دیٹ سیم ڈرائیو میں بہت سارے پاکستانی پالیٹیشینس who are working in Canada ان کے ساتھ کام کرتی ہوں, والنٹیئر کرتی ہوں. So I feel that has come because of my societal upbringing or whatever I learned from the society in Pakistan. تو فرحان, جیسے ابھی فصیحہ نے بھی کہا کہ پیرنٹس ہمارے جو ہے وہ پیسے نہیں مانگیں گے اگر ہم وہ کر لیں گے, تو جیسے کینیڈین کلچر کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بچہ 16 سال کا ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں چلو اب جاؤ کام کرو, اپنا رینٹ بھی دو, اگر گھر میں رہ رہے ہو تو کھانے کی بھی پیسے دو. تو اس کا کچھ فائدہ ہوا ایز اے پاکستانی کلچر کے لیے؟ آپ کو اس طرح کی چیزیں تو فیس نہیں کرنی پڑی؟ I did started working when I was in high school. They never asked for pay me rent or do this or now that you're 16 or 18 you need to go find your own place. They always said that you're always welcome to stay as long as you want here. Basically, again, to them, they're still running on their system, thinking that okay, everybody's going to get married, they're going to live in one place. And do you like the idea to live with the parents? To be honest, as a Muslim, again, it comes down to if what are you following. As I grew up as a Muslim, like to me, it's very important to take care of my parents, regardless of where they're living. It's my duty. I feel that I have to take care of my mother, if she's asking or not asking. If she needs help, I need to help her. That's how I look at it. Yeah, it's very different and I like our culture. ہمارے فیملی میں ایک ڈائنامک ایسا ہے کہ ایون اف میں نے جاب کری اور میرے پیسے ہیں, ہم سب ابو سے پھر بھی پرمیشن مانگتے ہیں, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. اینڈ اٹس آور منی, اٹس آور تھنگز, اٹس ناٹ مائی تھنگ. کچھ بھی میری چیز نہیں ہے, سب ہماری چیز ہے. تو بہت ڈفرینٹ ڈائنامک ہے. میں یہاں بڑی ہوئی ہوں تو میری بہت ساری لائک کوری دوست ہیں, and when they were like 14, 15, they would start paying for their own phone bill. And that was amazing to me because that was something that I always took for granted, and I guess it's something you think about and you're like, wow, like we're so privileged کہ ہمارے پیرنٹس ہم کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں. اور میں نے briefly I used to work at a senior home, اور مجھے یاد ہے کہ senior home میں ہمارے پاکستانی لوگ بہت کم تھے. اس سے ہماری فیملی کا ڈائنامک ایسا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو سنبھالتے ہیں, right? So it was very different, or I was shocked کہ اتنے لوگ they just leave their parents in a senior home. It's a very different dynamic. I would never think about that. Though hum bahut fortunate hai. I love the culture, and it's a very different upbringing that I'm very fortunate That's for. The cultural difference that that's why you don't see a lot of brown parents in the community centers or retirement centers, because we want to return the favor. Because they did help us out, they raised us, and see, that's a good point. Like, and then we feel that it's our duty to exactly to do because the same thing. They're not asking for money, so you think I am so in debt, like I owe you everything because you've done so much for me. You've never asked for anything in return. So I feel it's not only in debt. I mean, it's part of it, but aapke maa baap hai to there's this intrinsic love you feel for them. Correct, but that's again cultural difference would be. This is the biggest one. Sure, to my white friends, they're like, hey, it's okay, you know what, my mom's living in that retirement center, she's got a lot of old friends hanging out together, no problem. And they're happy with that, they're comfortable with that. With me, I don't think I would ever be comfortable with my mom living in a retirement center. فصیحہ, آپ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں ٹورانٹو یونیورسٹی میں, اتنے عرصے سے کمیونٹی کے ساتھ ہیں, پاکستانی پولیٹیشنس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہی ہیں. کبھی آپ کو اس طرح کی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی میں کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا جس پہ بچے بھی ایک جگہ جمع ہوتے, ان کے پیرنٹس بھی ایک جگہ جمع ہوتے, تاکہ ان کے اگر کوئی مسائل تھے, لیٹ سے کہ رشتوں کے مسائل ہیں جو بہت بڑی پرابلم ہے پاکستانی کمیونٹی میں یہاں پہ, تو وہ مسائل سالو ہو سکتے. تو آپ سمجھتی ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر کے کمیونٹی میں کوئی پلیٹ فارم آپ جیسے ینگسٹرس کا ہونا چاہیے؟ جی بالکل, آئی کمپلیٹلی اگری. آئی فیل کہ کوئی بیچ مڈل پرسن میڈیٹر کی بہت کمی ہے جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ کے جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو برج کرا سکے. جو آپ نے جیسے شادیوں کی بات کہی, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں مینٹل النس کو پاکستانی لوگ النس نہیں سمجھتے. ٹھیک ہو جائے گا,
بٹ آئی فیل کہ اس طرح کی کاؤنسلرس کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے جو ماں باپ کو یہ سمجھائیں کہ اگر آپ کا بچہ ڈپریشن یا انگزائٹی یا کسی اس قسم کی چیز سے گزر رہا ہے تو یہ ایک ایکچوئل مسئلہ ہے اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی سالوڈ, میڈیکل اٹینشن نیڈس ٹو بی گیون ٹو اٹ. سو آئی فیل یہ شادی کے علاوہ یہ بہت میجر بلکہ اس چیز کو پیرنٹس چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کہ ہمارے بچے کو ڈپریشن ہے, بلکہ ڈپریشن تو ایک عام سی چیز ہے, ہر کسی کو ہوتا ہے, کوئی بیماری نہیں سمجھی جاتی. تو فرحان آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ The platform here, I think most people, I hang out at, there's a community center close to, in Mississauga, ISNA. I hang out there a lot. I think they bring a lot of people together who have the same issues, like marriage issues, and all Muslims, they hang out together. So they try to find commonality in all the kids. Like they try to get them married and you know, get them together, play games. So the platforms are there here that we just have to look for them and, you know. تو اس پلیٹ فارم پہ آپ جو ہے جاتے ہیں کبھی؟ I do. اپنے پیرنٹس کے ساتھ سب مل کے؟ My parent, again, my father is not here. He you know, he passed away, but my mother, she comes down, joins me at ISNA sometimes. I do help out a lot of families. We run our biggest food bank that serves 700 to 800 people every month. First Saturday of every month. If you you know, if you're in need, there's a lot of works being done to help out people. We just have to look for the sources here to bring the cultural differences together. So آمنہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, and I actually don't think there is one. You know, you're talking about ISNA, and I went to an Islamic school every Friday, and it helped me a lot. اس سے میں نے بہت سیکھا, you know, about religion. لیکن in terms of parents or بچوں کو قریب کرنے میں, I don't think there is a platform. ہم کو بہت ضرورت ہے, because when the values are a little different, جیسے ہم یہاں بڑے ہو رہے ہیں, ہمارے values تھوڑے different ہیں, اور اس کی وجہ سے problems it creates a lot of problems between parents and their children. And so I don't think we have a platform. I think parents a lot of the time, because they're so busy, وہ بچوں کو maybe swimming class میں چھوڑ دیا, کیا you know, religion class میں ڈال دیا, یہ سب کر دیا, لیکن they don't get involved themselves. اس سے وہ feel کرتے that there is like a language barrier. You know, the language barrier is so important. People think وہی جیسے فرحان نے کہا کہ مسلم کمیونٹی سینٹر, تو مسلم کمیونٹی سینٹر آپ لوگوں کے لیے تو ایزی ہے, لیکن لیٹ سے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو انگریزی نہیں بول پاتے, پیرنٹس جو ہے, تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ دیکھیں مسلم کمیونٹی سینٹر ISNA ہماری پاکستانی کمیونٹی ڈفرینٹ بیسیکلی ڈفرینٹ کلچر کے لوگ, تو وہ سب تو ISNA نہیں جا سکتے کہ ISNA اگر اچھا کام کر رہی ہے. کہ جب یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا, تو وی نیڈ سم تھنگ سیکولر, ناٹ ریلیجیس, کیونکہ ایک تو فرقے بہت ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سب کی الگ بلیفس ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ پرابلم یہ بھی ہے کہ ایز اے کڈ, آئی واز آلسو ٹینیجر ایٹ ون پوائنٹ کینیڈا, میرا بھائی بھی ہے, جب آپ اس قسم کی باتیں ماسک میں کرنے جاتے ہو نا, تو بچے بھاگتے ہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ کوئی سیکولر سیٹنگ میں ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کی اوپن کانورزیشن ہو سکے. And it's true, like ہمارے we're very lucky, ہم اتنے ملٹی کلچرل سٹائل میں رہتے ہیں, and these platforms do exist, لیکن پاکستانی platform specifically there isn't one, and it's harder for parents to go to, you know, English speaking you know, outside platforms, and so it causes more problem. I think no, there is so to me it doesn't matter, Islamic, non-Islamic, it's a community center, right? They have all kinds of people come there. I recently noticed they had this matrimonial event. No parents are there. It's like basically a speed dating service, but in a proper cultural way where, you know, guys and girls can mingle together. جو آج کے ینگسٹرز ہیں وہ میوزک بھی سننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کمیونٹی سینٹر میں میوزک پروگرام نہیں کر سکتے. Actually you can. There's a full service gym that you know, you can hold your weddings in, your dinners in. So there's tons of them. I'm not saying just ISNA there, but there's tons of community centers where people come together from different, you know, on Eid days there's a lot of events where a lot of cultures come together. But I think that what another thing is that this is also your earlier question about values. Pakistani people, we kind of like to keep within our
section of Islam, our community where we live in Karachi. So it's very difficult for them to come to like ISNA if they don't agree with, you know, So religious this views. is where, this is where the issue is. It exists. I agree, it exists. This is where the issue is, right? But Sure. it is a So personal issue. they want to stick with their own community. They don't want to look at a society as a whole society. Like to them, it's Pakistan and that's it. If I like a person that is not Pakistani, and she's a Muslim, I'm okay marrying her, right? My parents are okay for me if I want to marry her, or if you want to marry somebody, let's say if you ended up finding a guy that is from Russia but he's a good Muslim, would your parents push you to find a Pakistani man, or they would say, hey, you know what, this is a good guy, you go ahead and marry him? Okay, so I understand what you're saying. Obviously, unki first priority hogi that I find a Pakistani guy only because it's easier. Exactly. How is that easy? Okay, but dekhiye, for you it's different. You were born and raised here, so you want to live that lifestyle. But for me it's easier because they know that मैं किसी पाकिस्तानी लड़के के साथ ज़्यादा खुश रह सकूँ. For her, let's. No, like you I would, grew up mostly yeah. here. I grew up Are here. you okay with Yeah, you know, like, whatever parents you're? No, I they think pick a that guy for you because and that is a get you very, married. you're looking at a very extreme example, and you have to be careful there because this is something that dictates the rest of your life, and you would want people who are similar to your beliefs, to your cultural values as well. Okay. And I think that, like I said, I identify as a Canadian Pakistani, and there are so many Canadian Pakistanis in the community. So that's what I'm saying. So let's say if you find a guy that matches your values, whatever you believe, okay, but it's not Pakistani. ओके नाजरीन, ये टॉपिक बहुत लंबा होता जाएगा, टाइम की कमी की वजह से हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकते, मगर ये है कि आपने देखा कि हमारे बच्चे पाकिस्तानी कल्चर को पसंद करते हैं, मगर दे वांट टू बी अ प्राउड कैनेडियन, दे वांट टू से अ प्राउड कैनेडियन. तो हमें कैनेडियन कल्चर को भी उतनी ही अहमियत देनी पड़ेगी जितनी हम अपने कल्चर को देते हैं. तो नाजरीन, अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.